Hello students, I am Bani, your English facilitator at Learn Forward by Fly High, and today we'll be discussing the chapter The Dynamite Merchant. I hope you all are doing really good. It's winter season, so I hope you all are packed and wearing warm clothes. So let us start with the chapter. This story is about Alfred Nobel, who invented and made powerful explosives. This helped increase the destructive capability of human beings, yet Nobel left much of his fortune for the Nobel Prizes, one of which is aimed at promoting world peace. These two facts about Nobel are contradictory. Let us read the story to know them. Now, this chapter, this story is based on the person Alfred Nobel. Now, हमने बहुत सुना होगा that person received a Nobel Prize. What is a Nobel Prize and how is it derived? तो जो नोबेल प्राइज है वो इस बंदे के नाम से डिराइव हुआ है, नोबेल से. इस बंदे ने ही डिस्कवरी करी थी नोबेल प्राइज की एंड इसके नाम पे वो बेस्ड है. सो अल्फ्रेड नोबेल जो था, ही वाज एन एक्सप्लोजिव्स मेकर. एक्सप्लोजिव्स का मतलब होता है जैसे बॉम्ब्स वगैरह हो गए, आर्मरी हो गई और ग्रेनेड्स वगैरह हो गई, जो चीजें ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनी होती हैं, जो चीजें वॉर्स में यूज होती हैं, जो चीजें एक बहुत मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूज होती हैं, दोज थिंग्स आर एक्सप्लोजिव्स. नाउ एंड इन द सेकंड थिंग, इन द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, इसने नोबेल प्राइज को भी बनाया. नोबेल प्राइज, नाउ जो नोबेल प्राइज था, इट वाज एम्ड एट प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस. तो जो नोबेल प्राइज था उसका मेन मोटिव ही प्रमोट करना था वर्ल्ड पीस को. बट पहले ये जो बंदा था, ही वाज द मेकर ऑफ एक्सप्लोजिव्स. तो एक्सप्लोजिव्स तो सब कुछ को डिस्ट्रॉय करना था ना, मतलब. सो ये जो दो फैक्ट हैं, फर्स्ट की वो एक्सप्लोजिव्स बनाता था, सेकंड की उसने नोबेल प्राइज की डिस्कवरी करी, ये दोनों फैक्ट्स उसके बारे में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. क्योंकि एक जगह वो दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए चीजें बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, एंड ऑन द सेकंड हैंड he is promoting world peace. So let us start with the chapter. Alfred Bernhard Nobel was born in Stockholm, Sweden on 21st October 1833. His father, Emanuel Nobel, was a self-educated inventor. क्या थे वो? Self-educated inventor. Alfred was the third of four sons. चार बच्चे थे इमैनुअल नोबेल के, एंड अल्फ्रेड थर्ड सन थे ऑफ द फोर सन्स. Failing in business in Stockholm, Emanuel Nobel took his family to St. Petersburg, Russia in 1842. तो जो इमैनुअल नोबेल थे, जिनके बेटे थे ये अल्फ्रेड नोबेल, वो इमैनुअल नोबेल अपने बिजनेस में फेल हो गए थे स्टॉकहोम में, जहाँ पे वो रहते थे स्वीडन में. तो वो अपनी फैमिली को सेंट पीटर्सबर्ग रशिया ले गए थे इन द ईयर 1842, ताकि कुछ और स्टार्ट करेंगे काम वहां पे जाके. देयर ही मैन्युफैक्चर्ड राइफल्स एंड लैंड एंड वाटर माइंस. क्या मैन्युफैक्चर किया? राइफल्स. राइफल्स मतलब गन्स, एंड लैंड एंड वाटर माइंस. अब ये जो लैंड एंड वाटर माइंस होती है ना, ये भी टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव्स होते हैं, बॉम्ब्स वगैरह टाइप की चीजें होती हैं जो वॉर के दौरान यूज करी जाती हैं. अल्फ्रेड वाज अ सिकली चाइल्ड. वो बहुत ज्यादा तबीयत उनकी खराब रहती थी, एंड वॉज एजुकेटेड एट होम बाय ट्यूटर्स. तो उनकी जो एजुकेशन थी वो घर पे ही होती थी बाय ट्यूटर्स. बाय द टाइम ही वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, जब तक वो 17 ईयर्स के हुए, ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस. 17 साल के होते होते ही वॉज अ मास्टर ऑफ 5 लैंग्वेजेस. ही स्पेंट अ ईयर स्टडिंग केमिस्ट्री इन पेरिस. कहाँ पे? 1 साल उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी पेरिस में. देन he was in the United States for 4 years. कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में थे वो, वर्किंग अंडर जॉन एरिक्सन, अ नेवल इंजीनियर एंड अ शिप बिल्डर. तो क्या हुआ, मतलब ऑल्दो हिज एजुकेशन वाज एट होम बाय ट्यूटर्स, ही स्टिल वाज अ मास्टर ऑफ 5 लैंग्वेजेस. ही वाज हाईली एजुकेटेड एंड ही वेंट टू पेरिस टू स्टडी केमिस्ट्री फॉर 1 year, एंड देन ही वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 4 years वर्किंग अंडर जॉन एरिक्सन, अ नेवल इंजीनियर एंड शिप बिल्डर.
जब वो 21 ईयर्स के हुए, एल्फ्रेड रिटर्न्ड टू सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया. हिज फादर हैड begun some experiments with nitroglycerine बट अबैंडन देम. तो जो इमैनुअल नोबल थे ना, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे नाइट्रोग्लिसरीन के साथ, बट उनको छोड़ दिया था बीच में, मतलब उनको अबैंडन कर दिया था, उनको बीच में रोक दिया था. Alfred resumed these experiments and invented a blasting cap. तो अल्फ्रेड की जो सबसे पहली अचीवमेंट थी ना, फर्स्ट अचीवमेंट was the invention of blasting cap. पहली इन्वेंशन, फर्स्ट. सो एल्फ्रेड रिज्यूम दीज एक्सपेरिमेंट्स. नाइट्रोग्लिसरीन के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स उसके पापा ने करने शुरू करे थे, वो उसने रिज्यूम करे और ब्लास्टिंग कैप की इन्वेंशन करी, मेड ऑफ fulminate of mercury and explosive salt to fire a charge of nitroglycerin. The cap was a significant historical development. तो जो ब्लास्टिंग कैप थी, ये बहुत बड़ी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बनी थी. Although still sickly, नोबल अभी भी बीमार रहते थे. नोबल took charge of the family business. फैमिली बिजनेस अपने अंडर ले लिया and soon diversified to bridge building and construction. और फिर उसके बाद he became a constructor. ब्रिज बनाने लग गए, कंस्ट्रक्शन करने लग गए, which eventually motivated him to research new methods of blasting rock. In 1863, he returned to Sweden. स्टॉकहोम वापस गए and set up a small factory to make nitroglycerin. वो फिर उन्होंने अपना ये वाला जो काम था, ये बिजनेस जो था कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, वो सारा अबैंडन कर दिया फॉर द टाइम बीइंग, एंड वो चले गए वापस स्टॉकहोम स्वीडन, जो उनका जो होम था, होमलैंड था. एंड वहां पे उन्होंने एक फैक्ट्री सेटअप करी छोटी सी, जहां पर वो नाइट्रोग्लिसरीन बनाते थे. क्या बनाते थे? Nitroglycerin. You have to focus a lot on this word nitroglycerin because it is there a lot in this chapter, and the whole story is based on this explosive. A year later, a terrific explosion destroyed the factory and killed five people, including his younger brother Emil. तो एक साल बाद जब उन्होंने फैक्ट्री बनाई थी, तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, आग लग गई एंड डिस्ट्रॉय हो गई फैक्ट्री. 5 लोग मर गए एंड उसमें से एक उनका खुद का भाई था छोटा, जिसका नाम था एमिल. फॉरबिडन बाय द स्वीडिश गवर्नमेंट टू रीबिल्ड द फैक्ट्री. अब स्वीडिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि अब आप फैक्ट्री सेट नहीं कर सकते, आपने इतनी ज्यादा जान को हार्म करा है, आपकी वजह से ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रॉय हुई है, वो भी 5. सो यू आर नॉट अलाउड टू सेट अप अ फैक्ट्री वंस अगेन. बट ही वाज डिटरमिन्ड टू रीबिल्ड द फैक्ट्री टू मेक द एक्सप्लोजिव सेफर टू हैंडल. तो उसने सोचा था कि मैं फैक्ट्री तो जरूर बनाऊंगा, ये चीज मैं गिव अप नहीं करूंगा, बट इस बार जो एक्सप्लोजिव होगा, जो नाइट्रोग्लिसरीन में सेटअप करूंगा, इट विल बी सेफर टू हैंडल. नोबल मूव द फैक्ट्री टू अ बार्ज moored इन अ लेक. जो शिप होती है ना, जो शिप जैसे फॉर एग्जांपल साइड में लगी हुई होती है शिप सी के, तो उस शिप वाली उसमें लेक में उन्होंने फैक्ट्री को सेटअप कर दिया. बार्ज अ फ्लैट बॉटम बोट. मूड का मतलब होता है बोट अटैच टू सम एंकर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्रिफ्टिंग अवे. तो जो एज होता है ना लेक के एज पे, एक बोट को, एक बहुत बड़ी बोट को, शिप तो नहीं कह सकते, एक बहुत बड़ी बोट को अटैच करके वहां पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप करी. इन 1866, after disastrous explosions at world ports, many nations forbade their vessels होती है ships, to carry nitroglycerin. तो अब गवर्नमेंट को पता लग गया कि काफी सारे लोग अपने वेसल्स में, अपने शिप्स के पोर्ट्स पे वो कर रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं, अपने एक्सप्लोजिव्स बना रहे हैं, एंड काफी ज्यादा वो भी हो गए थे, एक्सप्लोजन्स भी हो गए थे. तो उसके चक्कर में गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया इस चीज पे कि अब आप शिप्स के अंदर, बोट्स के अंदर एंड एज पे, लेक्स के, आप कुछ भी ऐसा काम या फैक्ट्री कैरी ऑन नहीं कर सकते हो. बट नोबल वॉज डिटर्मिन्ड टू फाइंड अ सोल्यूशन. बट नोबल को ये था कि आई विल मेक समथिंग आउट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एंड आई विल डू इट. He was eventually successful when he mixed nitroglycerin with a special sand to make a sort of clay which he patented as dynamite. So he was also the inventor of dynamite. तो डायनामाइट कैसे बना था? जब उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन
को सम सॉर्ट ऑफ क्ले से ऐड कर लिया था, क्ले से मिक्स कर लिया था, ठीक है। तो उन्होंने उसका नाम रखा, अब ये जो डायनामाइट था, ही वॉज द ओनर ऑफ डायनामाइट। ओनर कैसे कि ही वॉज द क्रिएटर, इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। तो उसने उसका नाम पेटेंट कर दिया। अब कोई और डायनामाइट नहीं रख सकता था उसका नाम, क्योंकि डायनामाइट ऑलरेडी उसके अंडर एक बहुत बड़ी एंटिटी बन चुकी थी। दिस इन्वेंशन मेड नोबल वेल्दी। तो डायनामाइट बनाकर जो नोबल था, ही बिकेम वेल्दी, रिच हो गए। ही स्पेंड द नेक्स्ट 10 years, अगले 10 साल, ही स्पेंड सेटिंग अप प्लांट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, एक्सप्लोसिव प्लांट्स बनाए उन्होंने। प्लांट्स मतलब प्लांट्स वाले जो फूल वाले प्लांट्स होते हैं वो नहीं, बट एक्सप्लोसिव प्लांट्स बनाए यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में। इन 1876 ही पेटेंटेड ब्लास्टिंग जेलेटिन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ गन कॉटन एंड नाइट्रोग्लिसरीन। अब उन्होंने क्या बनाया, ये फर्स्ट इन्वेंशन थी, डायनामाइट थी सेकेंड इन्वेंशन। अब है थर्ड इन्वेंशन पे आते हैं, यहां लिख देती हूँ। थर्ड में उन्होंने बनाया ब्लास्टिंग, अभी फर्स्ट थी ब्लास्टिंग कैप, सेकंड क्या था, सेकंड था डायनामाइट, एंड थर्ड क्या था, ब्लास्टिंग जेलाटिन। ये जो ब्लास्टिंग जेलाटिन उन्होंने बनाया, वो उन्होंने गन कॉटन प्लस नाइट्रो ग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन को और गन कॉटन को दोनों को मिक्स करके उन्होंने बनाया ब्लास्टिंग जेलाटिन। इन 1878 he and his brothers developed oil fields in Russia, oil fields भी बनाए, ठीक है। ये भी याद रखना है, आपको याद रखना है कि उन्होंने क्या क्या चीजों की डिस्कवरी करी थी, इन्वेंशन करी थी। इन 1888 he invented बैलिसाइट, वन ऑफ द फर्स्ट स्मोकलेस पाउडर एक्सप्लोजिव्स। अब ये जो बैलिसाइट था ना, ये बैलिसाइट में धुआं नहीं निकलता था, so it was easier to handle and it was safer for all the people working in the explosive industry, because उनसे उनकी डेथ नहीं होती थी एंड उतनी ज्यादा चांसेस नहीं होते थे डेथ होने के, बिकॉज वो जो स्मोक थी वही तो सबसे ज्यादा हार्म करती थी लोगों को। नोबल नोबल नेवर मैरिड, उनकी कभी शादी नहीं हुई। ही फाउंड रिक्रिएशन इन हिज लैबोरेटरी, वो खुश थे, वो उन्होंने लाइफ का तरीका ढूंढ लिया था। ही फाउंड अ वे टू लिव एंड बी हैप्पी इन द लैबोरेटरी एंड इन राइटिंग पोएट्री इन इमिटेशन ऑफ हिज आइडल पीवी शेली, पर्सी बिश शेली। तो पीवी शेली एक बहुत बड़े पोएट हैं, तो उनके तरह उन्होंने लिखना सीख लिया था। इन लेटर ईयर्स ही ट्रेवल्ड throughout Europe and had homes in Paris, Stockholm and San Remo, Italy, which earned him the title of the richest vagabond. Vagabond होता है a person who travels from place to place, जो aimlessly travel करता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको vagabond कहते हैं। उन्होंने he became so rich after his inventions and discoveries that he had home in San Remo, Paris, in Stockholm, इन स्टॉकहोम स्वीडन, इन पेरिस, हर जगह पर, इटली में भी हर जगह पर उनके घर थे। तो उनको टाइटल दिया गया द रिचेस्ट वैगाबॉन्ड। इन 1876 he met Bertha Kinsey, later Baroness von Suttner, a Bohemian noblewoman. She was one of the world's leading pacifists. पैसिफिस्ट होते हैं दोज पीपल हु प्रमोट वर्ल्ड पीस, ठीक है, जो लोग वॉर को, वायलेंस को अनजस्टिफेबल कहते हैं, जो कहते हैं कि वॉर और वायलेंस नहीं करनी चाहिए एंड आपको वर्ल्ड के पीस को प्रमोट करना चाहिए। तो ये जो बंदी थी बर्था किन्जी, शी वॉज दी वर्ल्ड्स लीडिंग पैसिफिस्ट। इन लेटर्स टू नोबल ओवर सेवरल ईयर्स शी एनलार्ज्ड ऑन हिज आइडियाज फॉर वर्ल्ड पीस। तो मतलब when they both connected and when they both started talking, he never married somebody, but when they both connected and when they both started talking, this woman Bertha Kinsey, she enlarged the idea of world peace for Alfred Nobel. तो Nobel's bequest for a peace prize was largely in tribute to her. तो जो मतलब नोबेल की वो थी ना कि क्या करना चाहिए आगे, जो उसकी विल पास ऑन होनी थी, उसने वो एक पीस के प्राइस के ऊपर कर दी। उसने किसी को दिए नहीं पैसे, अपने घर में नहीं बांट दिए, बट एक नोबेल प्राइस इन्वेंट किया कि ये वर्ल्ड के पीस को
पीस को प्रमोट करने के लिए एक प्राइस है. Though he was somewhat doubtful of the effectiveness of the pacifist movement, he died on December 10th, 1896 in San Remo, leaving the executors of his will to work out the details of administrating the Nobel Prizes. So this was the chapter. It was his journey from being an explosive master to being the richest vagabond to being a pacifist himself to being a basically non-war promoter and a world peace promoter. तो कैसे वो एक एक्सप्लोजिव बनाने वाला बंदा था एंड देन ही बिकेम द रिचेस्ट वैगाबॉन्ड, गरीब इंसान से आकर एक इतना रईस इंसान बन गया एंड देन उसके बाद वर्ल्ड के पीस को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाई. So let us now come to the question and answers. Which part of the sentence has an error? If the sentence is free from error, mark no error. Noble moved the factory to a large moat in a lake. Noble moved the factory. So this is the error. Which of the following was a synonym of rich? Rich का synonym क्या होता है? Wealthy. Which of the following words is an antonym of claim? Abandon. Now, Alfred was the dash of 4 sons. First, second, or third? Third. Where did Emmanuel Nobel take his family after failing his business in Stockholm? St. Petersburg, Russia. Alfred Bernard Nobel was born on 21st October 1823. No, 1833. Emmanuel Nobel was a dash inventor. He was a self-educated inventor. Self-educated inventor. Make a sentence of your own on inventor. Now, we can say Alfred Nobel was one of the biggest inventor in the world. How many languages could Alfred Nobel speak when he was 17 years old? 5. What did Alfred invent? Blasting cap, blasting gelatin, dynamite, and a lot of other things. He spent a year studying chemistry in Paris. He was in the United States for 10 years. He was in the United States for 4 years. False. Now take the correct option. Birthplace of Alfred Bernhard Nobel was Stockholm, Sweden. At the age of 17, Alfred Nobel could speak how many languages? 5 languages. Alfred Nobel studied chemistry in United States, London or Paris? Paris it is. In which year Alfred Nobel returned to Sweden and set up a small factory? In which year he returned to Sweden and set up a small factory? Let us recheck. So, in 1863, he returned to Sweden and set up a small factory. Now, Alfred Nobel was 9 years old when his family moved to Russia. False. Alfred didn't go to school, so he wasn't educated. He was educated. False. By tutors at his own place. Alfred's father was in war business. He was basically an inventor rather than in war business, so this is false. Nobel developed dynamite by combining nitroglycerin with gun cotton. False. It was nitroglycerin with some sort of clay, and he developed blasting gelatin by combining nitroglycerin and gun cotton. So you have to be very careful in these type of questions because these confuse you a lot. I'll mark this question, so whenever you see this video, you have to make sure that you remember that he did not combine nitroglycerin and gun cotton to make dynamite, but blasting gelatin. Now, in 1890, Nobel and his brothers developed oil fields in Russia. I have to check the year, just a second. Now, in
In 1878, he and his brothers developed oil fields in Russia. In the year 1878. So false. In Now answer the following questions. Name 4 inventions of Nobel mentioned in the story. First is blasting cap. Second is blasting gelatin. Blasting cap. Dynamite. Blasting gelatin. And fourth is ballistite. Just let me check once again. Ballistite, one of the first smokeless powder explosive. These are the 4 inventions. How did Bertha Kinsey influence Nobel? She was world's leading pacifist and she enlarged the idea of world peace for Alfred Nobel. Alfred resumed the experiments on nitroglycerin. Was he successful? How do you know? He resumed the experiments on nitroglycerin when he moved his factory to a boat, but his experiments, they were, they were interrupted because the government stopped them from working on the boats. But then he made dynamite and he was very successful because it was a very big invention. And he also made blasting cap before than that, and that was a historical invention. Why did the Swedish government not permit Alfred Nobel to rebuild his factory? It was because when he made a factory and he was working with nitroglycerin in that factory, there was an explosion and 5 people were killed, 5 human lives uh, were killed. So one was even his little brother. So the Swedish government, they banned him from making a factory again. Why did he move his factory to a barge? Because he was not permitted by the Swedish government to work in the same factory because there was an explosion. What was Nobel determined to find a solution to? Did he achieve the objective? How? He was determined to find a solution to make nitroglycerin safer to handle so that there would not be a lot of explosions. So yes, he achieved his objective when he found out ballistite because it was a smokeless explosive. So that is it. He made a lot of inventions and discoveries, and I hope that you will one day make something out of your own. You'll do something great in life. So that was all. Thank you so much. Happy learning. Goodbye.